is what? The maximum velocity, critical velocity is what? The maximum velocity by which the flow of liquid is streamlined. Beyond the velocity, what? It becomes turbulent. So already I got that critical velocity Vc is equal, what is that? K eta by rho d. Now K is the proportionality constant here. K is what? K is the proportionality constant. Here K is the proportionality constant. K is the proportionality constant. Write down the likho. Here K is R. Here K is equal R, and R is known as Reynolds number. Reynolds number. Reynolds number. R is the Reynolds number. ये कांस्टेंट क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर है. Therefore Vc is equal R, what is that? Eta by rho d. And what? R is known as Reynolds number. Write down where R is the Reynolds number. Reynolds number gives about the flow of liquid, whether it is streamlined or turbulent. Here write down where R is the Reynolds number. R is the Reynolds number. Understand this? Clear? Now write down significant of R. Significant of R. What is that? Write down significant of R. What is its significant? Significant of Reynolds number. What is the significant? Significant of Reynolds number. What is that? Write down first significant. Write down the first significant. Significant of Reynolds number. The first significant. First significant. Write down Reynolds number between 0 to 1000. Write down Reynolds number between 0 to 1000. Reynolds number between 0 to 1000. The flow of liquid is said to be streamlined. The flow of liquid is said to be streamlined. Write down Reynolds number between 0 to 1000. The flow of liquid is streamlined. Number 2, Reynolds number between 1000 to 2000. Reynolds number between 1000 to 2000. The flow of liquid is converting from streamlined to turbulent. The flow of liquid is converting from streamlined to turbulent. Sir, please repeat Okay. once Significant again. of Reynolds number. Write down significant of Reynolds number. सर हाँ बोलो. सर चिरंजीत बोलो. सर आज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अरे आज यहीं से शुरू हुआ. सिग्निफिकेंट ये हियर के VC इज इक्वल के इटा बाय रोडी. कल हुआ था, है कि नहीं? अरे ये कल हुआ था ना. VC इज Yes, इक्वल sir. के इटा बाय रोडी. ये भूल गए? नाउ Yes, sir, हियर हुआ था. के जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K इज इक्वल Yes, sir, R हुआ लिखो. था. देखो वेयर K इज इक्वल R. R is known as Reynolds number. K is equal R is known as Reynolds number. Write down. And Vc is equal R eta by rho d. Vc is equal R eta by rho d. Vc is equal R eta by rho d. हो गया? R eta by rho d. Now significant of Reynolds number. Write down significant of Reynolds number. Significant of Reynolds number. First significant. Reynolds number between 0 to 1000. Write down Reynolds number between 0 to 1000. 0 to 1000. The flow of liquid is said to be streamlined. The flow of liquid is said to be streamlined. The flow of liquid is said to be streamlined. And number 2, Reynolds number between 1000 to 2000.
Reynolds number between 1000 to 2000, 1000 to 2000, the flow of liquid is converting from streamline to turbulent. Between 1000 to 2000, the flow of liquid is converting from streamline to turbulent. Third significant is what? Reynolds number beyond 2000, write down, beyond 2000, the flow of liquid is turbulent. Beyond 2000, the flow of liquid is turbulent. Clear? ये था significant of Reynolds number. Beyond 2000, the flow of liquid is said to be turbulent. अरे समझ में है? Understand this? हो गया? Yes, sir. Now this is सर about. हाँ बोलो बोलो. सर हाँ बोलो. सर ये टर्बुलेंट का मतलब क्या है? सर टर्ब्यूलेंट टर्बुलेंट है, का मतलब टर्ब्यूलेंट. अरे फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्ब्यूलेंट. बताया था स्ट्रीमलाइन एंड लेंट सर. टर्ब्यूलेंट. अरे टर्ब्यूलेंट है. वाह. अरे स्ट्रीमलाइन क्या है? ये स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, टू टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आर देयर ना. एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दूसरा क्या है? टर्बुलेंट फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो मींस व्हाट? ऑर्डरली फ्लो. टर्बुलेंट मींस व्हाट? डिसऑर्डर फ्लो ऑफ लिक्विड. अरे समझ में आया प्रतीक? हेलो. ये सर सर मैंने टर्बुलेंट सुना था लेकिन टर्ब्यूलेंट. अरे टू टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिक्टेट किया था, देखो. एक है स्ट्रीमलाइन, दूसरा है टर्ब्यूलेंट. लिखे हो ना? देखो कॉपी में. तो कॉपी है क्या? ये सर लिखे सर सर जाओ. मैंने सुना टर्बुलेंट क्या है सर? टर्बुलेंट सुना सर. टर्ब्यूलेंट है, टर्ब्यूलिन नहीं है. टर्ब्यूलेंट. द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी टर्ब्यूलेंट. टर्ब्यूलेंट. वाह, आवाज ठीक से पहुंच नहीं पाया शायद. हो गया? अंडरस्टैंड दिस? आगे बढ़े. या यस किसका सर कुछ यस सर. क्वेश्चन है? किसका कुछ क्वेश्चन है? नहीं है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ दिए थे अननोइंगली. डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ दिए थे. लिखो स्टोक्स थ्योरम. STOKE. स्टोक्स थ्योरम. व्हाट इज दैट? राइट डाउन. स्टोक्स थ्योरम ये क्या है? ये भी डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ दिए थे. स्फेरिकल बॉडी दैट इज मूविंग इनसाइड ए फ्लूइड of coefficient of viscosity eta with velocity v, then viscous force F is acting on the body, viscous force F, that R is the radius of the sphere. तो विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहीं पे लिखेंगे, डायमेंशन एनालिसिस में निकालेंगे. लिखो, राइट डाउन. अकॉर्डिंग, पहले डायग्राम ड्रॉ करो. ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, according to Stokes theorem, the viscous force F, the viscous force F, according to Stokes theorem, the viscous force F acting on a spherical body, the viscous force F acting on a spherical body moving inside a fluid, moving inside a fluid depends Sir. on the following. विस्कस फोर्स है. Viscous force F. सर विस्कस फोर्स के बाद viscous force F क्या लिखे हो? बोलो, फिर से बोलो. अरे क्या लिखे हो? बोलो. सर अकॉर्डिंग According to this Stokes theorem, the viscous force F acting on a body, on a spherical body, acting on a spherical body, moving inside a fluid, moving inside a fluid, moving inside a fluid depends on the following factors. Depends on the following factors. Bit 1, coefficient of. सर और एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा. Okay, the write down. According to this theorem, the viscous force F acting on a spherical body depends on the following factors. Bit 1,
coefficient of viscosity, coefficient of viscosity eta. Number 2, radius of the sphere, radius of sphere r. Number 3, velocity of the body, velocity of body b. How depends, we don't know. So let f is proportional to eta x, proportional to ry, proportional to vz. Then what will happen? F is proportional to eta x, ry, vz. Now calculate the value of x, y, z. So f equal to k eta x, ry, vz. Now calculate x, y, z is how much? Find out by dimension analysis. Find out by dimension analysis. Write down. Find out by dimension analysis. So f is what? M1 L1 t minus 2. K is dimensionless 1a. Eta is your M1 L minus 1 t minus 1. T minus 1. R है L1, रेडियस का क्या है L1 है, एंड वेलोसिटी क्या है L1 t minus 1. So what will get here? This is what mx L minus x t minus x, and this is what Ly and Lz t minus z. Now collect the power of m. Mx L minus x plus y plus z t minus x minus z. T minus x minus z. T is what? Minus x minus z. ये x है. अरे t is a minus x minus z. This is what? T minus x minus z. Clear? And यहीं पे m1 L1 t minus 2. Now what are there? X is equal 1. If you compare, देखो, if you compare all this, what will get? If you compare here, x is equal 1, my first equation, minus x plus y plus z is equal 1. Second equation, minus x minus z is your minus 2. Third equation. So x already 1, पता है, minus z is equal minus 2, minus z is minus 1, z is equal 1. तो x1 मिल गया, z1 मिल गया. अभी y चाहिए मुझे. How to calculate y? Look here. How to calculate y here? How to calculate y? इसमें minus x plus y plus z is equal 1. My x is 1, z is 1, so y also 1. So I will get x1, y1, z1. लिखो. Therefore, I will get x1, y1, z1. Like this I will get. Now put there and get the formula. What is Stokes theorem? लिखो. हो गया? What is the formula here? Therefore, the formula is nothing but f equal to k eta x ry vz, ry vz. Therefore, f is equal k eta rv, because all are 1. Experimentally, the value of k is found to be 6 pi. 6 pi experimentally निकाला गया. लिखो. Experimentally, the value of k is found to be what? 6 pi. Therefore, I will get here f is equal 6 pi eta rv. F equal to 6 pi eta rv. ये Stokes theorem. This is what? Stokes theorem. Experimentally, the value is found to be 6 pi. So f equal to 6 pi eta rv. Application of Stokes theorem. Application of Stokes theorem. Application of Stokes theorem. Application of Stokes theorem, that is terminal velocity. Application of Stokes theorem or terminal velocity. What do you mean by terminal velocity? Application of Stokes theorem or terminal velocity. What is that?
टर्मिनल वेलोसिटी क्या है देखो, व्हाट यू मीन बाय टर्मिनल वेलोसिटी? लुक हियर, अगर दिस इज व्हाट ए पॉन्ड, पॉन्ड में जस्ट अगर एक क्रिकेट बॉल ड्रॉप करोगे, एक क्रिकेट बॉल को ड्रॉप करोगे यहीं पे, वो क्रिकेट बॉल का स्पीड क्या था इनिशियली, जीरो था, ड्रॉप कर रहे हो, ऊपर रख रहे हो पानी के ऊपर, वो क्रिकेट बॉल का स्पीड स्लोली गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, आफ्टर सम पॉइंट द क्रिकेट बॉल स्पीड विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब कहाँ तक इंक्रीज होगा, सपोज यहीं तक इंक्रीज हुआ, यहीं तक इंक्रीज होगा वेलोसिटी, फिर इसके बाद वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट टिल इट्स बॉटम। क्लियर? इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मींस एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ये पोर्शन में, इट्स इट्स वेलोसिटी इज व्हाट इंक्रीजिंग मींस एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, along this portion its velocity is constant means what, acceleration जीरो हो रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो आ रहा है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड द फ्लूइड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। What is terminal velocity? The constant velocity by which a body is moving inside the fluid is known as terminal velocity. The constant velocity by which the body is moving inside a fluid is known as terminal velocity. So at terminal velocity acceleration is zero means net force on the body is zero. यहीं से यहीं तक कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बट आफ्टर दिस नेट फोर्स विल बी जीरो। समझ में टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, the constant velocity by which the constant velocity by which a body is moving, the constant velocity by which a body is moving inside the fluid, the constant velocity by which a body is moving inside the fluid is known as is known as terminal velocity, is known as terminal velocity, is known as terminal velocity, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो रेन ड्रॉप का हालत क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप सम किलोमीटर से आ रहा है, अरे रेन ड्रॉप जो है सोचो 6 या 7 किलोमीटर से आ रहा है, ऊपर गिर रहा है। रेन ड्रॉप का, एक रेन ड्रॉप का अगर मैं मास लूँ सपोज 2 ग्राम, वाह 6 किलोमीटर नीचे गिर रहा है, मतलब अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो हालत क्या होगा देखो, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जी दैट इज व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा ऑलमोस्ट, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट है सपोज 6 किलोमीटर मीन्स 6000 मीटर, एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विच व्हाट फॉल्स ऑन आवर बॉडी, कितना आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v इज इक्वल व्हाट 2as का रूट ओवर, a मीन्स 10, s मीन्स 6 × 10⁻³ मतलब ये है 12√12 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सोचो जरा 100 मीटर, मोर देन 100 मीटर पर सेकेंड में अगर एक रेन ड्रॉप बॉडी के ऊपर गिरेगा तो बॉडी का हालत क्या होगा, अरे क्या होगा, एक छोटा सा ड्रॉप भी 10⁻² मीटर पर सेकेंड में गिरेगा तो हालत क्या होगा, इट विल पियर्स इनटू आवर बॉडी। एक रेन ड्रॉप बहुत व्हाट पेनफुल होगा, बट वी आर एंजॉइंग रेन, क्यों? You see, air can be treated as fluid, air can be treated as fluid, and the raindrop initially what will happen, it is suspended in cloud, and when raindrop is what falling there, its speed goes on increasing up to certain level, beyond that its speed remains constant, its speed remains constant, and with that constant velocity it falls on the ground. Clear? This constant velocity is known as terminal velocity of the raindrop. That means from this to this some accelerated motion will be there, beyond that the acceleration will be zero, means net force on the raindrop is zero. समझ में आया? अरे दिमाग के अंदर गया या कुछ क्वेश्चन पूछना है यहीं पे बोलो, अरे कुछ क्वेश्चन पूछना है यहीं पे, हेलो? नहीं, आगे बढ़े, लिखो टर्मिनल वेलोसिटी, डेफिनेशन लिखा, लिखो टर्मिनल वेलोसिटी, द कांस्टेंट वेलोसिटी बाय व्हिच, राइट डाउन द कांस्टेंट सर और वेलोसिटी, क्या क्या बोलो साई सत्वी? सर टर्मिनल वेलोसिटी आप मतलब डिक्टेट कर चुके थे कर सर। चुके हैं, ओके। द कांस्टेंट वेलोसिटी बाय व्हिच द बॉडी इज मूविंग इनसाइड द फ्लूइड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट डाउन whenever, write down whenever the body is moving inside a fluid, लिखो
whenever the body is moving inside a fluid, following forces are acting on it. Whenever a body is moving inside a fluid, following forces are acting on it. Following forces are acting on it. Following forces are acting on it. Acting on it. What are they? If R is the radius here, first step viscous force F vertically upward, फिर upthrust एक जाएगा U vertically upward and इसका weight जो है downward W. ये तीनों फोर्स काम कर रहा है। एक है विस्कस फोर्स F वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अपथ्रस्ट U, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, एंड वेट ऑफ द व्हाट बॉडी W डाउनवर्ड। मतलब एट इक्विलिब्रियम टर्मिनल वेलोसिटी विल बी देयर। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? F प्लस U इज इक्वल W होगा। अरे F प्लस U विल बी W के साथ सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया? लिख दिया ना? डायग्राम हो गया? Yes, sir. देखो, फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। नंबर वन, राइट डाउन, विस्कस फोर्स। फर्स्ट फोर्स है विस्कस फोर्स F वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। viscous force F vertically upward, therefore F is equal 6 pi eta RV, जो स्टोक्स थ्योरम से मिल रहा है हमको। F इक्वल टू 6 pi eta RV, 6 pi eta RV। सेकेंड जो है मिल रहा है वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी downward, weight of the body downward, W is equal mg. Mass is what? Density of the body into volume of the body into g. W is equal mg. Mg is rho b vg, where rho b is the density of the body. Therefore W मुझे मिल रहा है, W मिल रहा है, W is equal rho b vg, or we are going to get rho b, v is our 4 by 3 pi rqg, write down, or weight of the body is our 4 by 3 pi rq rho bg, where rho b is the, write down, where rho b is the density of the body, where rho b is the density of the body, where rho b is the density of the body, where rho b is the density of the body. लिखे सभी? हेलो? Yes, sir. Now third is, write down, third force upthrust U vertically upward. upthrust उसका नाम है इसलिए vertically upward है। third is upthrust, third है upthrust U vertically upward, vertically upward। तो इसका वैल्यू कितना है? U is your m dash into g। m dash क्या है? mass of displaced liquid, write down, where m dash is the mass of displaced liquid, mass of displaced liquid, how much liquid is displaced, and mass of displaced liquid is what? Density of liquid into volume of liquid into g। साइड में लिखो, V is the volume of displaced liquid, rho L is the density of liquid, V is the volume of liquid, displaced liquid, and G, write down, where rho L is the density of liquid। तो यहीं पे भी लिख सकते हो rho L into V into G, where rho L is the
लिखो where rho L is the density of liquid and V is the volume of displaced liquid, volume of displaced liquid, which is same as what? Volume of the body 4 by 3 pi r cube, which is same as what? 4 by 3 pi r cube into g. तो upthrust मेरा मिल रहा है. What is my upthrust? My upthrust is 4 by 3 into pi r cube rho L g. My upthrust is 4 by 3 pi r cube rho L g. This is my upthrust. दिस इज माई अपथ्रस्ट. तो तीनों फोर्स मिल गया. अभी क्या करना है? कंप्लीटेड. राइट डाउन एट इक्विलिब्रियम. सर बोलो सर थोड़ा सा लास्ट पेज कीजिए. देखो अरे कंप्लीटेड. ये सर हो गया. एट इक्विलिब्रियम. व्हाट इज दैट? इक्विलिब्रियम में क्या होगा? बोलो. अरे F प्लस यू इज इक्वल W हो जाएगा. राइट डाउन एट इक्विलिब्रियम F प्लस यू इज इक्वल W. F है 6 बाई ईटा आर वी प्लस अपथ्रस्ट क्या है? 4 बाई 3 पाई आर क्यू रो क्या है? अपथ्रस्ट क्या है? रो एल इंटू जी. एंड डाउनवर्ड में W क्या मिल रहा था? 4 बाई 3 पाई आर क्यू रो बी इंटू जी. वाह. तो यहीं से वेलोसिटी निकालेंगे कितना? 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल what will get 4 by 3 pi r cube rho b g minus 4 by 3 pi r cube rho l g. Now if we'll take common 4 by 3 pi r cube, this is what rho b minus rho l into g. This is what 6 pi eta rv. Now I have to calculate velocity is how much. कितना आएगा देखो, लिखो. Write down. ये वेलोसिटी को निकालना है कितना है. तो हाउ मच इज द वेलोसिटी? सी कैलकुलेट. दैट वेलोसिटी इज इक्वल हाउ मच? 4 by 3 pi r cube rho b minus rho l into g divided by what is that? 6 pi eta r. Is it clear? And ये कितना आ रहा है? This is what? How much you're getting? 2 by 9. 2 pi तो getting cancels out. R square rho b minus rho l into g by eta. ये है terminal velocity. This is what? Terminal velocity expression. So what is the expression of terminal velocity? V is equal to 2 by 9 R square rho b minus rho l into g by eta. This is very, very important. This is what we are getting? Terminal velocity. This is the constant velocity by which the body is moving inside the fluid. This is the constant velocity by which the body is moving inside the fluid. This is the terminal velocity. समझ में है सभी को? अरे सभी को समझ में है? हेलो, अरे समझ में है या डाउट है? सर क्या बोलो? बोलो क्या है? सर आपने जो कहा पहले वो लिक्विड का स्पीड बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा. कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा. ये सर. कितना स्पीड सर वो कांस्टेंट जो होगा? स्पीड जो ज्यादा होगा सर. हाँ, ज्यादा सर होने वो के बाद. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ सर स्पीड जो ज्यादा होगा वही वाला स्पीड कांस्टेंट और हाँ, वही बढ़ेगा वाला नहीं या नहीं, फिर वही कम? वाला जो ज्यादा हो रहा है मैक्सिमम स्पीड, वही मैक्सिमम स्पीड में निकल जाएगा. या फिर कुछ अगर स्पीड मैक्सिमम है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड, वो स्पीड थोड़ा थोड़ा घट जाएगा. वही घटने का स्पीड में ही कांस्टेंट ग्राउंड पे आएगा. जैसे इसका उल्टा हो रहा है पैराचूट में. व्हेन पैराचूट इज बेलिंग आउट, बिफोर बेलिंग दे आर फॉलिंग फ्रीली. If Ruben लिखा है रेन ड्रॉप विल फ्लो
एक्यूट एंगल इन टर्मिनल वेलोसिटी। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? रेनड्रॉप विल फॉल एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? एक्यूट एंगल मतलब क्या है बोलो रुबेन? अरे रेनड्रॉप तो सीधा आएगा ना। रेनड्रॉप तुम बोल रहे हो रेनड्रॉप ऐसे गिर रहा है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट। you are telling that raindrop is what? Raindrop is moving what like this, ऐसे ऐसे बोल रहे हो ना रुबेन? अरे रुबेन आवाज जा रहा है? आई थिंक यू आर टेलिंग लाइक दिस, आई थिंक। Okay, same here also terminal velocity will work. Understand this? जैसे भी रेन जाए तो that is what terminal velocity, ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, terminal velocity is always acting in all the cases. यहीं पे क्या है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ वही इंक्रीज वेलोसिटी में कांस्टेंट आएगा। इसका अपोजिट है पैराचूट केस में। मैं समझा रहा था जो पैराचूट में केस में क्या है, बिफोर बेलिंग आउट पैराचूटिस्ट क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। what he never opens a what parachute but freely fall कर रहा है। स्पीड इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्पीड इसका काफी बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा उसके बाद पैराचूट ओपन कर रहा है वो, देखा है कभी? है स्पीड जब बढ़ जाएगा पैराचूट ओपन कर रहा है। जब पैराचूट ओपन करेगा द स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अम्ब्रेला का जो पैराचूट है वो एयर रेजिस्टेंस होगा उसी के ऊपर, therefore the velocity goes on decreasing. After decreasing velocity एक minimum velocity आएगा, with that minimum velocity the parachutist will touch to the ground. and ऐसा नहीं, जीरो नहीं होगा, समझ में आया? डिक्रीज करते करते एक मिनिमम वेलोसिटी में वो ग्राउंड में डिसेंड करेगा एंड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पैराचूट भी जब बेल आउट हो रहा है उसी को भी टर्मिनल वेलोसिटी मिल रहा है एयर में। समझ में आया अभी चिरंजीत? सर बट वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है। देखो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, ये तुम्हारा डिटेल कोर्स में नहीं है, सिर्फ लिख लो, एक्स्ट्रा चीज है। नोट करके लिखो। नोट नंबर 1 जो एंट्रेंस के लिए जरूरत है, लिखो पॉइसल्स फार्मूला, POISEUILLE, पॉइसल्स फार्मूला। पॉइसल्स फार्मूला, पॉइस लिखे थे, देखा पॉइस वो पॉइजल है, वही पॉइजल है, पॉइसल्स फार्मूला। पॉइसल्स फार्मूला है Q इज इक्वल रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल पाई PR4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L। लिखो ये पॉइसल्स फार्मूला है। Q इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। Q क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब क्या है? वॉल्यूम बाई टाइम, बताया था वॉल्यूम बाई टाइम है। तो राइट डाउन वेयर Q इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, where Q is the rate of flow of liquid, R is the radius of the tube, L is the length of the tube, P is the pressure difference across the ends of the tube। P क्या है? प्रेशर डिफरेंस across the end of the tube। इसमें अगर प्रेशर P1 है, इसमें अगर प्रेशर P2 है, तो P1 minus P2 is your P, प्रेशर डिफरेंस। P1 minus P2 is P, where P is the pressure difference across the tube, प्रेशर डिफरेंस across the ट्यूब। एंड ईटा पता है बहुत फेमस है ईटा। अरे ईटा तो बहुत फेमस है, क्या है ईटा? सर पाई PR। पाई PR4, PR4, R is the radius of the tube, ईटा is the coefficient of viscosity, L is the length of the tube। इसमें से और एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, Q is the volume by time। अरे Q is the volume by time, that is pi, क्या बोलो? P is the pressure difference, write down। P is आशीष लिखो, P is the pressure difference across the tube, P is the pressure difference across the tube। सर और पाई? पाई तो पाई है, 22/7 है। अरे पाई जहाँ जाता है उसका नाम चेंज नहीं होता है, पाई 22/7 हुआ। वॉल्यूम बाई टाइम, वॉल्यूम बाई टाइम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द एरिया इनटू लेंथ बाई टाइम इज इक्वल पाई PR4 बाय 8 ईटा L। अरे लेंथ बाई टाइम इज वेलोसिटी, एरिया इज पाई R स्क्वायर, मेरा एरिया है पाई R स्क्वायर, लेंथ बाई टाइम इज द वेलोसिटी, एंड दिस इज व्हाट पाई